तो वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, नेपाल त्रासदी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां नेपाल आपदा के बाद दिल्ली पहुंचे हैं 21 भारतीय। तमिलनाडु के 21 तीर्थ यात्रियों के एक समूह से एस जयशंकर ने मुलाकात की है। नेपाल बाढ़ से बचाए गए भारतीय समूह से मिले हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। नेपाल की सेना ने अच्छा काम किया, ये एस जयशंकर ने कहा। उनके अनुभव को सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ, उनकी सुरक्षित वापसी में मदद करने के लिए सराहना करता हूँ। 21 भारतीय तमिलनाडु पहुंचे हैं। एस जयशंकर ने नेपाल सरकार का और उनके मैनेजमेंट को धन्यवाद किया है। नेपाल से दिल्ली लौटा भारतीय टूरिस्ट का दल। नेपाल में आई त्रासदी के बीच भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सरकार चिंतित और प्रतिबद्ध नजर आ रही है और पल पल की जानकारी वहां पर दे रही है। हालांकि एक तरफ वहां पर राहत सामग्री भी दी जा रही है, क्योंकि भारत की पॉलिसी है नेबरहुड की पॉलिसी और नेबर फर्स्ट की पॉलिसी, और ऐसे में नेपाल से तो वैसे भी रोटी बेटी का भारत का रिश्ता है, और इसी रोटी बेटी के रिश्ते को बनाते हुए या बरकरार रखते हुए आपदा की स्थिति में नेपाल के लोगों के लिए सहायता दी जा रही है। नेपाल में भारी बाढ़ के बाद जो त्रासदी आई है उसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है, बहुत से लोग अभी भी लापता हैं, उनमें से कई भारतीय भी हैं। ये दुख की बात है कि उसमें कई लोगों की जान चली गई है, कई लोगों ने अपनों को खो दिया है, कुछ के घर, कुछ के भवन, कुछ की इमारतें, कुछ के लोग आपस से बिछड़ गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो आपदा है वो न केवल प्राकृतिक आपदा बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी परिवारों के लिए एक मुश्किल समय है। Totally Indians 250 members are missing. Andhra Pradesh are 5 members. My roommates and my hotel mates, West Bengal 50 members, and Karnataka ESA Foundation members 80 members are missing. I am also just 100 meters before floods. Got my help. So I am happy. My family members are very. I just received. I received a group of people, Indians who had gone on pilgrimage to Mansarovar, Kailash Mansarovar, and they had been rescued after the floods. So they were brought back to Kathmandu. They were rescued by the Nepali Army, and then our embassy arranged for them to come back. So I just came to meet them and of course shared our great relief that they were safe and sound, and learned from them about their experiences. They were taken to Kathmandu, then our embassy is arranged for them to come back to India by the flight which has just come in. So I want to say right now, we are still very much focused on contacting all the Indians who are there. We believe little more than 300, exact number keeps going up and down. About 315 Indians are still not being contacted. Roughly about 85 Indians have